करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे जय जय करुणाब्धे। ॐ श्री महादेव शंभो। Welcome to everyone for Maha Shivaratri 2018. எல்லா தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாமே என் வணக்கங்கள். எப்படி இவ்வளவுதானா? महाशिवरात्रि 2018 में आप सभी का स्वागत है। For all of you who are not here, who are with us on this night by being on some television channel, my namaskarams to all of you. The dignitaries here, His Excellency the Governor of Tamil Nadu and the elected representatives from Tamil Nadu and other places, the ministers who hold various portfolios and various other dignitaries who are here today. I welcome all of you, above all, the devotees of Shiva who are here today. This night, which is referred to as Maha Shivaratri. Shivaratri happens every 14th day of the month. So generally 12 to 13 Shivaratris happen in a year. Shivaratri is considered the darkest night of the month. But this particular Shivaratri, which happens in the month of Magha, is considered as a Maha Shivaratri. Post-winter solstice or from the beginning of Uttarayana, this happens to be the day when many things shift with reference to what happens to the planet. And on this day, there is a natural upsurge of energy on the planet. This night is significant for that reason. Those who are on the yogic path, there are various levels of sadhana for them. But those of you who are not into any serious sadhana, this is a simple thing you can do. This night, you hold your spine upright so that you have a free ride, that you did not do 365 days of sadhana, but on this one day, if you stay with your spine erect, you have immense benefit. The sadhana that would take a long time, the kind of attainments that would take a long time happens very quickly on this night, simply because there is a natural upsurge of energy.
Especially being in certain places on this night is very important. For all of you who are at home watching television, you keep your spine extra straight because we have an advantage here. We are at 11 degrees latitude, 11 degrees north of the equator. Because of the tilt and the precision of the planet, at 11 degrees latitude, the upsurge of the centrifugal force that happens on the planet is nearly vertical. This is the reason why many temples are dotted along the 11 degrees latitude, starting from Chidambaram. We are here bang on 11 degrees. So everything is in your favor, only thing is you have to stay awake. Now, we have various musicians to keep you awake. We have mantras, we have music, we have meditations. Above all, you are in the grace of Adi Yogi. The significance of this night is seen in many different ways in the tradition. The householders see this as the wedding anniversary of Shiva and Parvati. That's their way of seeing it. The ambitious ones see it as the day Shiva vanquished all his enemies. That is their way of seeing it. The yogis and the sadhakas see it as the day when Adi Yogi became still, so still that he merged with Kailash Parvat. He became as still as the mountain and there was no difference between him and the mountain. So, on this day he became Nischala. So they are aspiring for that. There are many ways to look at this night, but the most important thing is that the nature is with us, Adi Yogi is with us. We should not miss the night. This is not just a night of wakefulness, this must become a night of awakening for every one of you, wherever you are in the world. This is a night of awakening, not just a night of wakefulness. Staying awake won't be a problem tonight, I'll keep you awake. Why this whole effort? One thing is Maha Shivaratri, another thing is why this Adiyogi? What is the significance today? Are we starting a new cult? Are we out to create a new religion? Or are we once again bringing back a legend to life? None of these. The significance of Adi Yogi is that he offered scientific solutions to every aspect of life's problems and issues and possibilities. Because the approach is so scientific, in these 15,000 years or more, people only were overwhelmed by his presence, overwhelmed by his stature, overpowered by his force, but did not really apply what he offered, because it took humanity to mature into a certain state of intellect and logic, which we feel today, for the first time, humanity is getting into that place. In the sense, today for the first time in the history of humanity, more human beings can think for themselves. I want you to just look back 100 years, 500 years, 1,000 years, how people were. A priest, a pandit, a mullah, a guru or a scripture taught for them. For the first time, a large number of people are beginning to think for themselves. I think the time has come for Adi Yogi
to walk this planet once again, because a scientific approach to human well-being has come. This is a force, this is a movement to shift humanity from religion to responsibility, looking up to looking in. So here we are, this is a day for you to make that beginning, that all solutions for human life here and beyond are within ourselves, because all problems on this planet were created by us and the solutions are obviously within us. So this Maha Shivaratri, I'm with you, whether you're here or on the television or wherever else you are. If you are focused on one aspect, that is an awakening to the life that you are, tonight is the day, tonight is the time to blossom into a new possibility. And night means till the sun rises. Does everybody understand this? Hello? Those of you who are just used to night parties, by 12:30, 1 o'clock, 2 o'clock you sleep away, not like that. Night means, night ends when the sun rises in the morning. So till then we are on, everybody. महाशिवरात्रि 2018 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे कई लोग जो टीवी के सामने अलग अलग चैनलों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ मौजूद सभी गणमान्य नागरिक, जिसमें तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल जी और कई मंत्रीगण शामिल हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। यह रात, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, हर महीने के 14वें दिन को शिवरात्रि कहा जाता है, यानी वो दिन जो अमावस्या से एक दिन पहले आता है। तो इस तरह से एक साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इस रात को, इस दिन को, जो कि माघ के महीने में पड़ता है, इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसे साल की सबसे अंधेरी रात भी माना जाता है। उत्तरायण लगने के बाद ये दिन वो दिन है जब इस ग्रह में, हमारी पृथ्वी में कई बदलाव आते हैं। और योगिक मार्ग में जो लोग हैं, जिनके जीवन में योगिक साधनाएं हैं, उनके जीवन में कई ऐसी साधनाएं होती हैं जिसका वो प्रयोग करते हैं इस रात की संभावना का प्रयोग करने के लिए। लेकिन आप में से वो लोग जो किसी तरह की योगिक साधना के मार्ग में नहीं हैं, आज आपके लिए एक बहुत सी सरल साधना है, बहुत ही सरल सी साधना है। वो ये है कि आपको अपनी रीढ़ पूरी रात सीधी रखनी है। कई सालों की साधना से जो फायदा मिलता है, वो फायदा आज आपको सिर्फ एक रात में मिल सकता है। आप में से जो लोग यहाँ आज मौजूद हैं ईशा योग केंद्र में, आप लोगों को एक विशेष फायदा है, क्योंकि आप उस जगह पे बैठे हैं जो ठीक 11 अंश अक्षांश पे है। चूंकि पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा झुका हुआ है, इस कारण 11 अंश अक्षांश पे ऊर्जा बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी कारण ज्यादातर मंदिर 11 अंश अक्षांश पे बनाए गए, जिसमें कि चिदम्बरम गांव का बहुत ही प्रसिद्ध नटराज मंदिर भी शामिल है। तो आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को बस जागृत रहना है, इतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप में से जो लोग टीवी में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको अपनी रीढ़ और भी ज़्यादा सीधी रखनी होगी। आज रात मंत्र होंगे, संगीत होगा, तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आदि योगी के सामने मौजूद हैं। महाशिवरात्रि की रात का बहुत महत्व है और अलग अलग लोग इस महत्व को अलग अलग तरह से पहचानते हैं। उदाहरण के लिए जो गृहस्थ जीवन में हैं, वो महाशिवरात्रि की रात को शिव और पार्वती के विवाह की रात के रूप में देखते हैं, तो इस तरह से वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। महत्वाकांक्षी लोग महाशिवरात्रि को उस दिन के रूप में मनाते हैं जब शिव ने अपने सभी दुश्मनों पर विजय हासिल की थी। योग के मार्ग में चलने वाले लोग महाशिवरात्रि को उस दिन के रूप में देखते हैं जब शिव पूरी तरह से स्थिर हो गए थे, बिल्कुल अचल हो गए थे। वो इतने अचल हो गए कि वो कैलाश पर्वत के साथ मिलके एक हो गए, एक पर्वत की तरह निश्चल हो गए थे वो।
तो इस तरह से अलग अलग लोग इस रात का अलग अलग तरह से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात प्रकृति हमारे साथ है, आदि योगी हमारे साथ हैं। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आज की रात आप सभी के लिए केवल जागरण की रात ही नहीं बल्कि आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। आज रात आप लोगों के लिए जागे रहना मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको पूरी रात जगाए रखूंगा। तो इस पूरे प्रयास का उद्देश्य क्या है? महाशिवरात्रि के इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? आदि योगी का क्या उद्देश्य है? क्या हम किसी नए धर्म की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। आदि योगी का महत्व यह है कि उन्होंने जीवन के हर आयाम का समाधान ढूंढने के लिए एक वैज्ञानिक मार्ग प्रस्तुत किया था। आदि योगी जब 15,000 साल पहले इस धरती पर प्रकट हुए थे, तब से लेके अभी तक हजारों लोगों ने आदि योगी की कृपा का अनुभव किया है। उनका जीवन रूपांतरित हो गया है उनकी कृपा के साथ। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने आदि योगी के द्वारा प्रस्तुत सभी साधनों का अपने जीवन में प्रयोग किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर लोग बौद्धिक रूप से इतने विकसित नहीं थे। देखिए, अगर आज से 100-200 साल पहले की अगर आप परिस्थिति पे गौर करें तो ज्यादातर लोग खुद के बारे में नहीं सोचा करते थे। कोई पंडित, पादरी या मुल्ला उनके बारे में सोचा करता था और उनको बताया करता था कि उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। लेकिन आज पहली बार मानवता ऐसे मुकाम पे पहुंची है जहां बड़ी संख्या में लोग खुद अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। तो आज समय आ गया है कि आदि योगी फिर से इस धरती पे चलें। ये समय है ये जानने का कि अगर हम वास्तव में खुशहाली का अनुभव करना चाहते हैं तो इसके लिए ना तो हमें ऊपर देखने की जरूरत है ना बाहर देखने की जरूरत है। सच्ची खुशहाली प्राप्त करने की राह हमारे भीतर है। तो आज इस महाशिवरात्रि की रात मैं आपके साथ हूं। आप चाहे जहां भी हो, आप चाहे यहां हो या आप अपने घरों में बैठ के टेलीविजन पे इस कार्यक्रम को देख रहे हो, मैं आपके साथ हूं। आज रात आपके लिए मौका है एक नई संभावना में खिलने का। तो आपको पूरी रात जागृत रहना है। रात का अर्थ जानते हैं आप में से जो लोग पार्टी करते हैं रातों में, आपको लगता है कि 12-1 बजे तक पार्टी की और फिर सो गए। वैसी रात नहीं। रात का मतलब है जब तक सूरज ना उगे। समझे आप लोग? जब तक सूरज नहीं उगता आप सभी को जागे रहना है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और पूरी तरह से सतर्क रहना है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। எனவே தீர்வுகளும் உங்களுக்குள்ளேதான் இருக்கக்கூடும். எனவே இந்த இரவு வெறுமனே விழித்திருக்கும் இரவாக இல்லாமல் விழிப்புணர்வு மிக்க இரவாக உங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமும் அருளும் ஆகும். இரவு என்று சொன்னால் சூரியோதயம் வரையிலான நேரத்தை தான் நான் இரவு என்று சொல்லுகிறேன். சிலர் இரவு விருந்துகளுக்கு போகிறவர்கள் 12-12:30 மணிக்கு மெல்ல நழுவி விடுவது போல் இல்லாமல் சூரியோதயம் வரையில் விழித்திருந்து இந்த அற்புதமான நாளினுடைய பயனை பெற வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். This is not a sorcery, this is a science. When I say a science, this is not a science which is trapped in the straitjacket of human logic. This is a science, this is a knowing that you arrive by dissolving yourself, by becoming one with everything, in union with everything, in yoga with everything. There are many dimensions to this. There's a very beautiful story that I should tell you right now. It once happened, a certain yogi, too full of himself, came and saw Shiva simply sitting there. But a lot of people even today, because of English education, a lot of people think simply sitting is a waste of time. In my childhood, I was always told that an idle mind is a devil's workshop. No, try to keep your mind idle and see. Maybe an idle person's mind is, but if somebody is simply sitting still, in today's world, because of the type of education we have received
and we think we have to be doing something all the time. Because of this, Shiva was simply sitting there. A yogi came who is too full of himself, and he looked at him and tried to provoke him. Shiva did not respond, simply sitting there. So he provoked him with abuse. Shiva did not respond. Then he physically poked him and said, "You're simply sitting there because you're afraid of me. You do not know what I know. You do not have the powers that I have." So, this went beyond point of irritation. So Shiva plucked a hair from his head and made a demon out of it. And he told the demon, "Eat this yogi, eat him up. He should not be walking this planet." So the demon grew up within minutes and became huge and started chasing the yogi. Yogi was terrified. Then of course he came and fell at Shiva's feet and, "Please save me, don't let this demon eat me." Then Shiva immediately changed his mind and said, "Okay, just leave him, let him go." Then the yogi went away terrified. Then the demon was standing there, burning with hunger, because he was created just to eat. So he said, "What am I supposed to do? Now you release that yogi, what am I supposed to do?" Shiva was already becoming still. He said, "You eat yourself." And then, before Shiva could turn around and look at him, he started eating himself up. When he looked at him, everything of his body was gone, only his face and 2 arms were left. He was beginning to eat his own arms. He broke his body into pieces and ate it up. So he looked at this, how quickly you ate yourself up. You are the most glorious face, only face is left. You are the most glorious face. You are above all gods. It is from this that even today, in almost every Indian temple, there is a face which is eating up its own arms, which is called as the Kirtimukha, the glorious face. So Shiva recognized, Adiyogi recognized that one who eats himself up, that who makes nothing out of himself, is the most glorious face on this planet. He must be above all the gods. Even today, do we have an image of Kirtimukha? I'm sure every one of you have seen this image in every temple that you have entered, that there is a face eating up his own arms. This is a night that you must promise me that you will become a glorious face. Still hands are there, you've not eaten them, you can tell me. This is not a night to make something out of yourself. This is a night to make nothing out of yourself, so that you become a truly glorious face, because you do not carry the burden of the person that you are. You do not carry this life as a burden. You become a glorious face today if you allow this night to eat you up. This is what this is about. Maha Shivaratri means this is a night where you must eat yourself up and become a Kirtimukha or a glorious face, so that you will be above all gods. ஒரு விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானம் என்று சொன்னால் தர்க்க அறிவிலே சிக்கி போகக்கூடிய விஞ்ஞானம் அல்ல. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக காட்டு, எல்லாவற்றையும் பொருந்தி போகக்கூடிய। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह एक विज्ञान है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के तर्क की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इस विज्ञान तक आप पहुंचते हैं जब आप खुद को विलीन कर देते हैं। एक कहानी है जो मैं आज रात आपको बताना चाहूँगा। एक योगी थे जो शिव से मिलने आए और उन्होंने देखा कि शिव बस ऐसे ही, बस यूं ही बैठे हुए थे।
आजकल के पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि यूं ही बैठे रहना समय की बर्बादी है। अगर आपको लगता है बस यूं ही स्थिर बैठे रहना समय की बर्बादी है, आप जरा स्थिर होने की कोशिश कीजिए, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना कठिन है। तो योगी ने देखा कि शिव बस यूं ही बैठे हुए थे बिना कुछ किए। योगी ने शिव को उकसाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। योगी ने शिव को गालियां दी, शिव ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। योगी ने शिव को कोंचा, फिर भी शिव ने कुछ नहीं कहा। फिर योगी शिव को भड़काने लगे। उन्होंने कहा, आप मुझसे डरते हैं, आपके पास मेरी जैसी शक्तियां नहीं हैं, इसी कारण आप मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। फिर योगी एक हद से पार जा रहे थे। शिव ने बस यूं ही अपने जटा का एक हिस्सा निकाला, उससे चट्टान पे दे मारा और उससे एक राक्षस पैदा हो गया और ये राक्षस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शिव ने राक्षस से कहा, इस योगी को खा लो। ये भयानक राक्षस योगी के पीछे पड़ गया। योगी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो तुरंत ही आके शिव के पैरों पे गिर के उनसे माफी मांगने लगा। शिव भी तुरंत ही करुणा में आ गए और उन्होंने इस राक्षस से कहा, छोड़ दो इस योगी को। डर के मारे योगी वहां से भाग गया। अब राक्षस ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आपने मुझे बनाया था इस योगी को खाने के लिए, आपने इसे जाने दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव उस तरह की हालत में थे, वो फिर से बस आंख बंद करके स्थिर होने ही वाले थे। उन्होंने बस इस राक्षस से कहा कि एक काम करो, तुम खुद को खा लो। इससे पहले कि शिव पलट के उसकी ओर देख पाते, वो खुद को खाने लगा। उसने अपने शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को खाने लगा। जब शिव ने उसकी ओर देखा तो केवल 2 हाथ बचे थे जिसको वो खा रहा था, केवल 2 हाथ और चेहरा। शिव ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी खुद को खा लिया, तुम्हारा ये चेहरा सबसे तेजस्वी चेहरा है, तुम भगवानों से भी ऊपर हो। आज भी अगर आप भारत के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको भगवान की मूर्ति के ऊपर कीर्ति मुख की मूर्ति दिखाई देगी। आदि योगी ने भी पहचाना कि वो व्यक्ति जो खुद को ही खा लेता है, जो खुद को जरा भी महत्व नहीं देता, ऐसा इंसान भगवानों से भी ऊपर है। हर मंदिर में, यहाँ तक कि हमारे मंदिर में भी आप जाएंगे तो आपको कीर्ति मुख दिखाई देंगे। तो आज रात आपके लिए ये मौका है, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप एक कीर्ति मुख बनेंगे। आज रात खुद को कुछ बनाने के लिए नहीं है, आज रात खुद को विलीन करने के लिए है। आज रात आप खुद को पूरी तरह से खा लें और एक कीर्ति मुख बन जाएं ताकि आप ईश्वरों के ऊपर हों। तो खुद को यहाँ बैठ के बचाने की कोशिश ना करें, खुद को पूरी तरह से विलीन कर दें, खुद को कुछ भी ना बना डालें।